जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी आप स्केल नहीं कर सकते. सो आई 100% एग्री दैट आई थिंक योर ह्यूमन रिसोर्स इज योर बिगेस्ट एसेट. कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं और आपके लोग नहीं ग्रो कर रहे देन देयर इज समथिंग रॉन्ग. वी मस्ट वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स दैट एक्साइट अस एंड दैट एक्साइट आवर एम्प्लॉइज, बिकॉज आपने दिन में 8 घंटे काम पे गुजारने. इफ यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट्स द फन इन दैट? आई फील लाइक द यंगर टैलेंट दैट इज कमिंग अप दीज डेज, वो एक इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल जो है ना उनको बहुत अपील करता है कि आज मैं वीडियो बनाऊं, कल मैं वायरल हो जाऊं, परसों मैं अमीर हो जाऊं. सो इवन इफ यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी एट अ कंपनी, देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम बिल्डिंग अ गुड पोर्टफोलियो थ्रू फाइवर और अपवर्क, a good LinkedIn profile, work on your communication skills, and you can land a job anywhere in the world. क्योंकि आपको कुछ चीज़ों को सिस्टमाइज करना पड़ता है. बिकॉज ऑब्वियसली जो आप 10 लोगों के लिए कर सकते हैं वो आप 1000 के लिए नहीं कर सकते. जो पॉलिसी आप 100 के लिए बना सकते हैं वो आप लाख के लिए नहीं बना सकते. First of all, thank you so much for joining us. This podcast is called True Essence because, a lot of times we have very superficial conversations. But then when you are in drawing rooms and when you're one-on-one and when you have meetings like this, especially I've been lucky enough to meet a lot of leaders like you. So there is you find the true essence of life, of things, of running a company, of building a business in Pakistan. और वो conversations मुझे personally लगा कि largely public के लिए available नहीं है. So in the early days, I personally started from hosting something called Fireside Chat. So Startup Grind इस्लामाबाद का मैं chapter director बना और मैंने Fireside Chat ऐसे ही I think 100-150 तो अब host कर लिए हैं. और फिर वो बहुत लाइफ में पिछले 2-3 साल में नहीं कर पाया, तो फिर हमें था कि ये पॉडकास्ट बनाते हैं. And then, I would love to do it again and provide a platform for others to have these conversations with leaders who are practically doing stuff and can share practical learnings for other leaders to get inspired. So I will, for the audience, try to give your introduction, maybe if I make any mistakes. So Mahe Zehra and Saad Hussain, you are both the co-founders of Five Rivers. So you are the CEO, you are the Chief Business Officer. Yes, we are. No, Five Rivers was there before both of us joined. Okay. Interesting. It's a family-owned company. Achha, so it's in my family, and actually that's how Saad and I met when I joined Five Rivers. So, but I think we've been running it now for the past 11 years. Oh, mashallah. Wow, that's a long time. Actually, more than that. 13 years. It's been 13 years now, yes. Wow, congratulations for 13-year anniversary of the company. And then, okay. So, and then I read online that from this company, now there is a real estate company that is making some family homes, and then you've got a venture fund for startups as well. Yes. Right? So, yeah, beginning of last year, हमने ये सोचा कि it would be fun to try a few other things. एक तो ये जिस तरह आपने भी बात की कि giving back to the community. Mashallah, there are so many bright people in Pakistan with a lot of good ideas. So Five Rivers Ventures जो है, it's our venture fund through which we are going to be investing in other companies. We already have a few companies in our portfolio, and inshallah this will grow. And Five Rivers Developers हमने शुरू किया था because it's a passion of mine to make beautiful things. I mean, that is how everything started for me. मुझे लगता है आप, whether it's a piece of software or it's a house that you build, things should be beautiful and they should be sustainable. मरी जाके बड़ी तकलीफ होती है because the architecture there is very garish and it's not in keeping with the landscape. मतलब एक चीज़ आपकी आँख को आके लगती है, अच्छी नहीं लगती. तो ये प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, एंड आइडिया इसका ये है कि ये दिखाया जाए कि ज़मीन को आपको चूसने की ज़रूरत नहीं होती. I mean, थोड़ी ज़मीन आप छोड़ दें, घर के ऊपर घर ना चढ़ाएं, लीव द फॉरेस्टेशन एज मच एज यू पॉसिबली कैन. तो ये 5 Pines के नाम से हमारी एक है छोटी सी कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग नियर द मरी फॉरेस्ट. Amazing, mashallah. From like a software company building a real estate project is like a next level of growth. So congratulations on that. Thank you. Now referring to, so we were just talking about number one, you've been in this industry for a very long time, right? Yes. And you've seen all the changes before 3G, 4G, after 3G, 4G, the emergence of remote work. Wow, we're old. Yeah. So मैंने तो अब 3G के बाद ही जिंदगी देखी, तो जो है ना, और so then also remote work, right? So pre-COVID,
I tried to talk to a bunch of people कि यार ये remote वाला बड़ा scene है. Andela जो है उस time पे, Andela is a company जो अफ्रीका में थी. आजकल उनका डाउनफॉल आ गया, बट एट वन पॉइंट मार्क जकरबर्ग ने $200 million उसमें इन्वेस्ट किया to upskill African talent and then place them on remote jobs. This is before COVID. And remote jobs wasn't recognized as a proper thing even in Silicon Valley. तो मुझे याद है लिटरली लाइक वो खुदा की कुदरत है, मैं कोरोना से महीना पहले उधर था, तो किसी ने बताया कि स्ट्राइप में 40 लोग रिमोट हैं और बेस कैंप एक कंपनी है जो फुली रिमोट है, बट अदरवाइज हमें रिमोट अच्छा नहीं लगता. और फिर कोविड आ गया और हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया रिमोट हो गए. तो इसमें मेरा ये सवाल होगा कि नंबर वन, where do you see the opportunity for Pakistani talent, Pakistani youths, software companies, service providers, the evolution from, let's say, a very basic outsourcing model जो कि बहुत पुरानी चीज़ है, to now something called team augmentation and remote jobs and all of this. So where are we headed, and what do you think is going to be Pakistan's placement in this new ecosystem? Okay, so I'll start and then Saad, you can continue because I'm sure you have thoughts on this. Our model actually from the beginning has been team augmentation. Oh, nice. Okay. हम लोग 2003 से we are in the market, and it's always been team augmentation for us because I feel like that's the only meaningful way in which you add value. Trying to pass off people as something they are not, वो आपको पता है हमारे मसले इस तरह के रहते हैं कि जॉब किसी नाम से ले ली और पीछे आउटसोर्स कर दिया. Those sorts of things I feel don't lead to the proper team dynamics जो एक होनी चाहिए. So our thing has always been team augmentation. All the people here working in Lahore are in constant contact with wherever their teams are in the US. And the working together, I feel उधर भी बहुत ग्रोथ होती है, इधर भी बहुत ग्रोथ होती है. Relationships बहुत बिल्ड होती हैं. From simple things like, उनको अगर मिर्ची के certain snacks पसंद है, तो our developers are telling them about okay, when you come to visit, we're going to feed you this and we're going to feed you that. And them actually understanding our culture a little more and knowing that, we mashallah have a lot of talent. So I feel like that can only happen if you're totally upfront about who you are. And it is a actual team augmentation model. You are who you are, you're having face-to-face conversations, और उसमें ये कि हमारे अपने टैलेंट की बहुत ग्रोथ होती है, because they're also learning, right? जिस तरह they learn about our culture, we learn about their work ethics, or we learn about, the new cutting-edge tech that we should be looking at. So in my opinion, actually, because that's what we've been doing from day one, team augmentation is the way to go. Saad? And adding to what you just said, जो cross-pollination of the thought process, how you think about solving a problem, it's completely different in the US, and it's different here. Yeah. And obviously वो environment बहुत बड़ा आपका factor है. When you interact with people abroad and उस तरह से आप interact करते हैं कि they know who you are, आपका exact नाम क्या है, शक्ल नज़र आ रही है, and जब वो दोस्तियाँ हो जाती हैं, so then you also, and when you sit together with them, and even in an online meeting, to try and problem solve, so you learn a lot with, how they're thinking. Yeah. How they approach a problem. And how they, how they live their life, उनका culture क्या है. Movies में हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, real life में चीज़ें different होती हैं. उसका बहुत positive impact होता है. And that's so important for us as a society to, take in and grow and see कि work ethic क्या है, कितनी जल्दी क्या चीज़ solve होती है, commitments क्या आने चाहिए, professionalism क्या आना चाहिए. So I think it has many advantages for us. Before COVID, I mean, all the company ka business model were, but I personally was like, what is this work from home? कोई भी नहीं काम करता, घर जाके सोते रहेंगे 12 बजे तक, बिस्तर से वो कॉल ले लेंगे. I mean, but then I was wrong. I mean, we were in the US when COVID we actually का had to सारा, leave in a rush. I think Yeah. the day we landed उसके 2 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया, एयरपोर्ट्स बंद,
सारा कुछ. मैं एक दिन पहले वापस आया था. So we were lucky that we got back, but on our way back, we were like, look, we need to go remote. Everyone is going to go remote. These are the tools that we will use to communicate. लोगों ने कहा नहीं हम ऑफिस खोलेंगे. No, safety first. Nobody is going to be sitting in the office to work. And we'll figure it out. This is a world first for our generation. We'll figure everything out as it comes along, but first and foremost, safety. So we went remote, and then we saw everyone give in 200%. They would give in extra because उनको भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है. तो वो भी परेशान थे. Also, I think they really appreciated the people first attitude. Like no hesitation on our part in saying that, you know, your health comes first and we will deal with everything else. And they really, and I feel like that's the way relationships develop, right? I mean, you do for your employee and your employee will pay you back in loyalty. And so, yes, none of them let us down at all. And it was a very, very good exercise for us, actually. And ever since I'm like, हाँ ठीक है, work from home works. Definitely आप करें. We've changed our policies. हम specific work from home days दिए हैं. We've got hybrid roles. We've got fully remote roles in the organization. But in certain things and खास तौर पे जब हमने huddle करना होता है या 2-3 दिनों का खास intense session होता है, so then we ask people to come in because we feel that's more productive. People might have connectivity issues, etc. उस तरह से कम 2-3 दिन लगा के एक retreat सी करके तो just knock everything out that needs to be done. But I also feel after COVID, a lot of us, because एक ये हमारी fantasy थी ना कि work from home, काश हमारी companies हमें work from home करने देती. But after everybody came back, there were a few, because आपकी personalities vary करती हैं. Some people work better alone, but some people also work better in a group. And a lot of people, they were like dying to get back to work. And they were like, we have to work in teams. Me specifically, I've seen like there are certain tasks that I like to do on my own, but then there are other times when just the energy and the atmosphere of the office is very important also. तो उसको I think बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए, because उससे फिर एक आइडिया जनरेशन होती है, आप एक दूसरे से सीखते हो, आप बातें करते हो, आपकी relationships build होती हैं. So I think a hybrid model is what we should pursue. It's also to fit all kind of people, right? मतलब मैं बड़ा इंट्रोवर्ट सा हूँ, तो मैं शुरू से, वो लगता नहीं है लेकिन मैं हूँ बड़ा इंट्रोवर्ट सा, तो शुरू से मैंने रिमोट काम किया. तो like office it doesn't work with me. But now one of my co-founders in a new thing we're working on, he's very office kind of person, so वो remote नहीं operate करता. So it's to have, maybe COVID में तो सबको मजबूरन remote करना पड़ा, but अब I think the world has settled into a new way of work where you're like कि अच्छा यार ठीक है, जिसको office आना आ जाए, जिसने घर काम करना है कर लें. But then at the end, performance evaluation is more on like your actual work than कि यार अच्छा ये office पहुँच गए time पे और ये time पे जा रहे हैं. But then also like taking this conversation in the context of, let's say, the Pakistani work environment, right, where I personally feel that in an economy and in an industry where we operate, where our core strength is basically talent, right? It is के सारी software companies basically इसीलिए पैसे कमाते हैं क्योंकि जो लोग हैं वो उनका resource है, वो experts हैं. So जिस दिन वो चले जाएंगे, the company is nothing without these people. But then at the same time, you see that a lot of companies do not value their people the same way. The way that you have mentioned, right? Which is probably the more equitable way. But that's also क्योंकि remote में या जिस model में आप काम करते हैं, वहाँ पर तो देखें वो इंसान की personality, वो सब कुछ वो real human ही है. जब outsourcing हो जाती है तो वो शायद नंबर ही बन जाते हैं कि पता नहीं बस ठीक है 3 आए हैं 3 गए हैं. और मुझे लगता है कि ये ट्रांजिशन अगर हम नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली भी हो जाएगी. अगर कोई कंपनी नहीं कर रही तो अब रिमोट जॉब्स हैं. लाइक वी ऑर्गेनाइज्ड द deal.com मीटअप yesterday in Islamabad, right? So I learned that there are more than 5,000 to 6,000 people working remotely through Deal in Pakistan, which is crazy. It's crazy growth. और क्योंकि अब global opportunities available हैं और
एट द सेम टाइम जो हम पहले बात कर रहे थे कि creating those learning opportunities and then talent nurturing, not just for the current talent but also bringing in new talent to the industry, right? So I, like 4 years ago, I went around and I talked to a bunch of tech CEOs and मैंने कहा जी क्या सीन है, मुझे पता लगा टैलेंट का बड़ा मसला है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बहुत मसला है टैलेंट का, और वी डू दिस एंड वी दैट, और टैलेंट का आज भी बहुत बड़ा मसला है। तो 5 साल में किसी ने सोल्यूशन नहीं ढूंढा। मतलब 5 साल में इतना कुछ हो सकता है, इतने रिसोर्सेज हैं। और जब आप इवन प्राइवेट सेक्टर से भी बात करें, आप यूनिवर्सिटीज से, इंस्टीट्यूट से, हर कोई बड़ा विलिंग है काम करने के लिए। कोई क्यों नहीं होगा कि यार आप आएँ, आप बताएं कैसे लोगों को ट्रेन करना चाहिए। तो आई थिंक कि मे बी एट सम पॉइंट इट इज़ अ विजन प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, कि मे बी अ लॉट ऑफ कंपनीज और पीपल जस्ट डू नॉट सी देयर ह्यूमंस एज ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड थोड़ी मेरी ज़्यादा लंबी हो गया, आपका वैसे पॉडकास्ट है, लेकिन एक मेरा रिसेंट रेवलेशन था कि जिस तरह हम एक चीज़ को कहते हैं विच इज सेट कल्चर, राइट? And my Taya is an amazing businessman and a lot of things I've learned from him as well. So I realized that the kind of value that is given to the resources in an organization in the SEAT culture, अगर वही फॉलो हो जाए सॉफ्टवेयर हाउसेज में तो वो रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट? मतलब ये कि जिस तरह फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है लोगों को, हम तो बचपन से देख के सब कुछ बड़ा हुए हैं, तो हमें तो पता है कि मतलब सेट कल्चर का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो क्या है, राइट? और वो हमारे कल्चर में सक्सेसफुल है, मतलब लिटरली वो सारी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। तो हम सिर्फ अगर वही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लें प्रॉपरली, राइट, हम वो 50% शायद ले आते हैं कि हम जब हमने पोर्शे खरीदनी होती तब तो हम सेठ बन जाते हैं, लेकिन जब टीम मेंबर की किसी घर में शादी है तो तब हम कहते हैं नहीं भी अब तो हम कॉर्पोरेट हैं, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक गैप है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और business ethics or the way business is done, because a lot of people who are running software companies do not come from a business background. They come from like a freelancing background or a software engineer background. और वो कुछ gaps हैं जो अगर शायद हम plug in करते हैं तो ये जो companies एक certain number पे stuck हैं बहुत सालों से, ये grow कर जाएं, right? और retention भी improve कर जाए। So इसी से मैं अपने अगले सवाल पे आऊँगा कि so how many, what kind of international clients do you deal with? What kind of countries do you operate in? Where do you see opportunity? We can obviously discuss Saudi Arabia, but then a lot of people are going to Saudi Arabia. There is like this amazing hype. Personally, I feel due to the experiences we've had there that the opportunity is very real, especially for Pakistanis, right? Because the Saudi normal, like the Saudis like Pakistanis, right? They like that we are Muslims and there's cultural similarities and historically there's been a lot of diaspora जो वहाँ पर है, और तो वो हमारे पास एक एज है। फिर ये कि जो हमारा ऑब्वियस कंपेटिटर है टैलेंट में, हमारे नेबर, वो उनके पास और भी बड़ी ऑप्शंस हैं, राइट? सो दे पिक अदर ऑप्शंस लाइक अमेरिका एंड दुबई एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो हर जगह पे प्रेजेंस है। बट देन हमारे लिए इतनी ऑप्शंस हैं नहीं, तो फिर हम सऊदी अरेबिया को बड़ा प्रेफर कर रहे हैं। मेरे नॉलेज के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पिछले 1 साल में सऊदी अरेबिया माइग्रेट कर गए हैं, 1 से 2 साल में, स्पेशली स्टार्टअप टैलेंट, बिकॉज सऊदीया में जिन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाना चाहते हैं, अब सऊदीया में स्टार्टअप का क्योंकि इतना ज़्यादा बैकग्राउंड तो है नहीं, और मिडल ईस्ट में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान हैज़ बिन एन अ स्टार्टअप लीडर, राइट? करीम की टीम, एक्स करीमर्स, और फिर पाकिस्तान में क्योंकि स्टार्टअप करना इतना मुश्किल हो गया पिछले 2 साल में कि मैं नोट कर रहा हूँ कि एक तो स्टार्टअप्स मूव भी कर रहे हैं, बट देन बहुत ज़्यादा स्टार्टअप का टैलेंट है जो सऊदी कंपनीज में अब चला गया। तो हम इस पे बात करते हैं कि व्हाट आर दी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन योर एज पर योर इनसाइट्स right now in the future. How do you see like which markets do you see have the most potential? Okay, so I'll go back a little bit and first talk about your वो जो आपने बात की थी about loyalty in companies. Yeah. So it's actually very funny. 5 Rivers, जब से मैंने join किया, I've always considered them a family, and that's the way we've always talked to them. I've always told everyone at 5 Rivers कि we're a family. We're together in the good, we're together in the bad. And I feel like जब तक आपकी वो relationship नहीं बनती, वो bonding नहीं होती, तो आपकी base नहीं बनती, because आप एक अकेला बंदा एक company को नहीं scale कर सकता। तो जब तक आपकी base strong नहीं होगी, आप scale नहीं कर सकते। So I 100% agree that I think your human resource is your biggest asset, and together you can achieve great things. That is number one, very important. That's actually a value that is very, very close to my heart.
कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं और आपके लोग नहीं ग्रो कर रहे, then there's something wrong. दोनों को साथ ग्रो करना है, that's the only sustainable way to do it. उसके बाद जो आपने रीजन में ग्रोथ की बात की, we have historically had most of our business come from the US, and we've worked with companies in the US mostly. 2 साल पहले we decided that हम लोग रीजन में थोड़ा और करेंगे काम. So we set up a sister concern in Dubai, and we started exploring the Saudi market, and that's definitely something that we do want to do in the future. But I feel like we must work everywhere, because वो जो हमारी पहले बात हुई थी कि आप हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हो, हर कल्चर की हर जगह की एक अपनी वर्क एथिक होती है, एक अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है. एंड वो जो साथ ने बात की थी ना कि थॉट प्रोसेस की जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, you learn different things from different people. So definitely we want to grow in the region, and that is a focus for us. But हमारा सबसे बड़ा जो focus है is that we must keep learning. Yeah. And we must keep trying new things. And we must work on projects that excite us and that excite our employees. Because आपने दिन में 8 घंटे काम पे गुजारने. If you're not excited about what you're doing, what's the fun in that? So for us, I think it would be a balance. We do want to grow in the region, but we want to make sure that we don't compromise on the quality of projects that we work on. Yeah, and it's also depends on whether you have to follow the money, right? These days, if you look at it globally, it's all talk is about the Middle East. Competition between Saudi Arabia and UAE. Saudi Arabia ne catch up karna hai, so they're spending a lot. UAE wants to make sure that the gap stays as wide as possible for as long as possible, so they're spending a lot. Saudi Arabia is poaching people from the UAE, expats जो कि settled हुए हैं वहाँ पे, ताकि वो अपनी वो labor force पूरी कर सकें. So for us, it's, and earlier this year when we went to Leap, a lot has changed. Obviously for Pakistanis ना, with time Saudi Arabia तो काफ़ी जाते हैं for obvious reasons. So I've seen it every, after 10 years stints, so significant change this time around. It's transforming, and I think now it's going to transform a lot quickly. So yeah, progress बहुत ज़्यादा जल्दी होगा compared to पहले. तो अगर लोग जा रहे हैं यहाँ से, that's great. We would love to form partnerships or do a JV, etc., work on products with Saudi startups or companies. One of the strengths that Fireworks has is because we've been doing this for about 20 years, and we've primarily worked with startups. Enterprise customers we rahe, but we've worked with a lot of startups, so we know and a lot of other companies, we know the experience that you get by working with a startup, high energy, at times low on funds, issues क्या हैं, the excitement, आपकी वहाँ की जो टीम है उसमें टेक प्रोफेशनल्स कितनी हैं, क्योंकि अब टेक टैलेंट का global shortage. So they might be great and they have a wonderful idea and they might be great in that specific industry that they're in, but they may not have the tech talent that's needed. So advising them on different stages as to this is not the right thing to do at this stage, wait 3-4 months, 6 months, looking at what's happening globally, and we've done that so much. That's also something that we wanted to take through the venture company, कि हम उस तरह से भी लोगों को यहाँ पे locally advice दें, and we want to do that in Saudi Arabia too. So any partnerships that we can formulate there, we'd be more than happy. और हम उस चीज़ को explore भी इस तरह से कर रहे हैं in the UAE as well as in Saudi. जो हमारी conversations चल रही हैं, that's what they're about. जो चीज़ें हमने सीखी हैं हम लोगों को बता सकते हैं, और जो tech talent हमारे पास है, और आजकल तो the buzzwords are generative AI and LLMs, etc. I mean, we've been working in AI since 2014, so we've seen the evolution of the industry, and we know कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या लोगों ने की है और evolve हम किस तरह से किए हैं. तो going forward, I mean, we'd love to share those insights to help others and and create, I think, meaningful products for the world.
बिकॉज आई थिंक अब नेशनलिज्म जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है. आई एम वेरी नेशनलिस्टिक पर्सन, बट आई ऑल्सो फील लाइक अब दुनिया को बहुत सोल्यूशंस की ज़रूरत है एज अ होल, पूरी दुनिया को. सो आई थिंक ideas first, you should be committed to a good idea, and then however you implement it and however you have to problem solve for it. One of the wonderful things that hum jab recently abhi gaye Saudi Arabia, as a woman I was told a lot of things ki, you know, aapko bahut shayad masla ho Riyadh mein, Jeddah mein. I was so pleasantly surprised कि number one कोई मसला नहीं था, and मेरा खुद art में बहुत interest है. We went to a really beautiful Islamic art exhibition there. And, you know, it just showed that the region is like, Saudi Arabia is really open to new ideas and new things. And that's so wonderful to see. Because अगर आप पीछे देखें, history भी देखें, तो the Muslims were also known as inventors. Mathematics, algebra, हमने की लाहौर में astrolabes बनते थे. I don't know if you know this. And they were nautical devices, और सबसे अच्छे लाहौर में बनते थे. So ये मुसलमानों का with knowledge, it's a very very long history that we have, and I really love that. You know, I feel that like that's rekindling. Absolutely, and I think you know, Saudi Arabia, for Pakistan obviously it's a big opportunity, but for the region it has now become a beacon of hope, right? Innovation, technology, cool चीज़ें. तो ठीक है, दुबई एक वैल्यू प्रोपोजिशन है. पर्सनली आई फील नाउ दुबई हैज़ बिकम टू कमर्शियल. एवरीथिंग इज़ अबाउट कि इतनी लाइसेंस फीस, वो चीज़, और हर चीज़ में वो बस चाहते हैं कि बस दुबई पैसे कमा ले, क्योंकि उनका तरीका भी पैसे कमाने का ही है. बट देन सऊदिया का विजन इज़ मोर टू ओपन अप देयर ऑन इकोनॉमी, एंड दे हैव अ मैसिव कंज्यूमर मार्केट देमसेल्फ, एंड दैट इज़ व्हाई आई फील दैट इट मे बी इवन अ बिगर अपॉर्चुनिटी दैन दुबई. Because number one global bridge बन जाएगा, but then local market भी, but also हमारे लिए तो life changing, because you know we missed whenever Dubai was being set up, right? But आज हमारे पास opportunity है, 3G 4G है, इतना बड़ा talent pool है, हमारी हज़ारों software companies हैं जिनके पास experience भी है, और तो हमें सिर्फ इसको plug in करना है इस market में, और they are the right fit. Like we keep hearing stories every other day कि यार इस company ने ये काम कर लिया, उसने वो काम कर लिया, और वो बड़ा फास्ट चीज़ें हो रही हैं. प्रोसेस वहाँ भी अभी इम्प्रूव किया जा रहा है, बट देन जो बाय इन है वहाँ के लोगों का, जिस तरह आपने कहा कि यू नो इवन द एनवायरनमेंट एंड कल्चर हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव. आई फील द बाय इन ऑफ द साउदी विजन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. So I would absolutely agree कि we need to think more of solving global problems, and you know obviously we want to help the country with everything. But then you know we can solve global problems, and then in that way help the country also. मतलब otherwise ये कि हम यहाँ छोटे छोटे मसले सॉल्व करने में अपनी सारी लाइफ कंज्यूम करते, तो हम इस बबल से बाहर निकले हैं, और अब इंटरनेट आ गया, बस ठीक है पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो यहाँ मदद हम करेंगे. बट ये कि काम अब मैं तो कहता हूँ डॉलर के लिए करना चाहिए, क्योंकि डॉलर ज़्यादा आते हैं और मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट यहाँ ज़्यादा है. और पाकिस्तानी टैलेंट की ट्रू वैल्यू जो है वो PKR में नहीं है. मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को 30-30 हज़ार सैलरी मिलती है, इट शुड बी ए क्राइम. $100 है, मतलब वो एक इंसान है जिसने डिग्री की है. $100 क्या होता है? एक कुत्ते पे अमेरिका में $500 लग जाते हैं और महीने के. और तो वी शुड place the Pakistani talent in the global economy, right? Which is what software companies and service providers have done for a very long time. And now with remote jobs, it can be done beyond tech also, right? Maybe artists and accountants and civil engineers. But इसी के साथ साथ क्योंकि आपने venture studio start किया, so I would love to learn more about how it is going and what are the opportunities that you see in terms of building products within the country as well, right? What do you feel from your vast experience of building products from the global market? What should be done, and how did you come up with this venture studio model, and how is it going so far? Okay, so शायद थोड़ा सा मेरा ओपिनियन अनपॉपुलर हो इधर, बट आई डू फील कि हमारा टैलेंट बहुत है, हमारे में अल्लाह का दिया हुआ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हम लोग थोड़ा ना मेहनत से घबराते भी हैं कुछ चीज़ों में. आई फील लाइक द यंगर टैलेंट दैट इज़ कमिंग अप दीज डेज, वो एक इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल जो है ना, वो उनको बहुत अपील करता है कि आज मैं वीडियो बनाऊं, कल मैं वायरल हो जाऊं, परसों मैं अमीर हो जाऊं. उसमें आपकी कोई लर्निंग नहीं होती. बिल्कुल ठीक.
a lot of young people want to do startups without any business experience or any work experience. Again, there are a lot of pitfalls that you can fall into, जो कि अगर आपने थोड़ा सा टाइम लिया होता, आपने थोड़ा सा सब्र दिखाया होता और थोड़ी सी मेहनत की होती, तो वो चीज़ें ना होती. मुझे एक सेंस ऑफ पैशन जो है ना यूथ में, बिकॉज वी रन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एंड ओवर द ईयर्स आई हैव सीन दैट हैज़ कम डाउन. इट हैज़ कम डाउन. मैं आपको बताऊँ, हम लोग इंटरव्यूज़ स्केड्यूल करते हैं एंड आपको पता है, मतलब इंटरव्यू आ रहा है, उसको पता है कि भाई मेरा फॉर इंस्टेंस CEO के साथ इंटरव्यू है. अगर मैं डायरेक्ट, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ इंटर्नी इंटरव्यूज़ डायरेक्टली, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क विद यंगर पीपल टू सी कि क्या दे वोंट शो अप, दे वोंट कॉल इवन टू टेल यू कि भाई मैं बीमार हो गया, कोई भी एक्सक्यूज़ बना दो, भाई दे विल नॉट शो अप. यू गिव देम द जॉब, एक दिन पहले जॉब से दिल से कि नहीं जी वी आर नॉट कमिंग. सो आई फील लाइक थोड़ी सी जो हमारी वर्क एथिक्स है ना, उसके ऊपर काम होने वाला है. थोड़ा सी हमें मेहनत करनी है. और ये आई एग्री विद यू कि डेफिनेटली पोटेंशियल है और दे शुड बी पेड प्रॉपरली, बट यू ऑल्सो नीड द वर्क एथिक एंड द लॉयल्टी दैट कम्स विद इट. हमें एक ना वो ओवरनाइट सक्सेस का बहुत वो हो गया है. वी थिंक कि हम 4 वीडियोज़ बनाएंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. दूसरा, ये जो इन्फ्लुएंसर एक माइंडसेट जो है ना, जिसने काम ख़राब किया है, इसके आजकल हमारे सारे बच्चे बस सोशल मीडिया पे वीडियोज़ ही बना रहे हैं. राइट? दे आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दैट. दे डोंट वांट टू सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम्स. दे वांट द गेट रिच क्विक थिंग. सो आई फील लाइक इतना ज़्यादा अभी दुनिया में डिमांड है टेक टैलेंट का. राइट? दैट इज़ अ डिमांड जो हम फुलफ़िल कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है और थोड़ी मुश्किल चीज़ करनी है. बिकॉज अगर पूरी दुनिया इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकती. राइट? बाय द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इन्फ्लुएंसर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और अगर पूरी दुनिया बन गई तो फिर काम ख़राब हो जाएगा. सो आई फील लाइक हमें थोड़ी मेहनत की और ज़रूरत है, और यंगस्टर्स को मेहनत की बहुत ज़रूरत है. एंड उसके बाद आई फील लाइक अब आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज लाइक यू सेड, अब पूरी दुनिया इज़ ओपन टू रिमोट जॉब्स. इफ़ यू आर गुड एट वॉट यू डू, आपको नौकरी मिल जाएगी. आप देखिए माशाल्लाह जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, वो कितने ग्रो किए हैं, वो कितनी आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं. राइट? सो इवन इफ़ यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी एट अ कंपनी, देयर इज़ नथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम बिल्डिंग अ गुड पोर्टफोलियो थ्रू फाइवर और अपवर्क, a good LinkedIn profile, work on your communication skills, and you can land a job anywhere in the world. So I feel like वो जो थोड़ा सा है ना एक हमारा कि थोड़ी मेहनत हमारी कम हो गई है, मेहनत हमारी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए टैलेंट की तरफ से. हमारा जो वेंचर फंड है, we have invested in a few companies in Pakistan, but we've also invested in companies in the US. And वो जो हमारी पहले बात थी कि we've always worked on a team augmentation model. तो one of the companies, they approached us and they said कि हमारा tech arm नहीं है, मतलब we just have the idea, we have the business people here, we have the sales people here, तो tech सारी आपने करनी है. So Saad is actually also an advisor to them and helps them out with that. We invested in the company. So locally हम ज़्यादा अब बच्चों के साथ काम करना चाह रहे हैं. मैंने आपसे जो पहले बात की थी, we're also thinking of opening up an institute where वो जो एक थोड़ा सा हमारा टैलेंट का मसला होता है कि यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं, दे नॉट रेडी टू स्टार्ट वर्क ऑन डे 1. एक थोड़ा सा गैप है जो कि आपका लर्निंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आ रहा है. तो उसके बाद आई वुड ऑल्सो लाइक टू ओपन अप अ स्पेस वेयर यंगस्टर्स कैन कम इन एंड हैव देयर आइडियाज़ वेटेड बाय इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड एक्चुअली गेट द मेंटोरशिप. बिकॉज एक चीज़ जो मुझे और मिसिंग लग रही है हमारी लैंडस्केप में, वो मेंटोर्स आपके बहुत कम है. Proper places where you have access to people who've done things before. Yeah. ताकि आप एक isolated ना रह जाएं उस तरीके से. So, mashallah, the venture fund is going well. Like I told you, we have a portfolio in Pakistan as well as abroad. And we are looking to now inject capital into younger companies and startups also. And the Pakistani companies, a couple of them are around the logistics optimization side. And then there's a company which is looking at bringing AI-based solutions for the Pakistani market and building products for the Pakistani market. Typically होता है कि हम problems अपनी solve करने के लिए हम कहते हैं ठीक है, it's already built, let's go and get a foreign product. और उसमें charm भी होता है कि जी
जर्मन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, कहीं और की है कि जी वो बड़ा सॉलिड होगा. And then they don't realize that when you pay for it, obviously that is foreign exchange, it goes away. Yeah. But similar products built for the local market locally so that it stays within the country and at the same quality as what you would find from anything that you buy abroad. So, and there's so many problems that need to be solved in Pakistan. आपको भी पता कि डिजिटाइजेशन कितनी हुई हुई है, कितनी कंपनीज क्या कर रही हैं, जो ऑटोमेटेड हैं वो दे स्टार्ट टू थिंक अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स. जो ऑटोमेटेड नहीं है वो डे टू डे रनिंग में दे डूइंग फायर फाइटिंग. दोज हु want to find solutions to different problems, they keep growing, they keep progressing. So those are the areas that we are focusing on. Industrial automation through एक angle industrial automation through machine learning का भी है, on seeing how efficiently your equipment is running, when you need to do what, possibly beforehand, before it actually happens, ताकि मेंटेनेंस के इश्यूज आपको ना हो. प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आ जाए एक तरह की. So those are just a couple of things that just came to mind. Actually, इस exercise में we've also found that there's a huge gap between the tech industry and other industry in Pakistan. Because जब आप उनकी फैक्ट्रीज में जाते हैं और आप उनकी जगह में जाते हैं और आप देखते हैं कि जो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, we can solve it. So वो I think एक वो बहुत ज़रूरी है for a country also, just for us. कि वो जो क्रॉस पॉलिनेशन है ना बिटवीन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड द टेक इंडस्ट्री, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इतने मसले हैं जो कि दे आर सॉल्वेबल, बट वो क्योंकि टेक इंडस्ट्री वाला टेक इंडस्ट्री में रहता है और इंडस्ट्रियल वो जो जितनी आपकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, टेक्सटाइल्स हैं और कोई भी आपकी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल अपने सेपरेट उसमें रहते हैं. तो वो जो दो दुनिया है ना, दे ऑल्सो नीड टू collide. They do because there's in a good way, collide in a good way. Nee, this is music to my ears because when we were curating the second Future Fest last wala, so one of our friends suggested कि यार you follow the biggest industries on stock exchange and all of that, और उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें, मतलब IT आउटसोर्सिंग तो आप कर ही रहे हैं और स्टार्टअप्स भी हो गया, और हम भी नया कंटेंट ढूंढ रहे थे बिकॉज एज अ प्लेटफॉर्म if we don't provide new things for our audience, like we'll become invaluable or unvaluable or whatever. But अब हमारा content 40 tracks में divided है. So even last year we had future of education and we had agri-tech and we had all these other things, or even some things very very traditional जो कि आपको किसी और tech event में, जिस तरह हम auto manufacturers की एक round table करा रहे हैं इस साल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ कि यार आप आएँ, आप भी तो इनोवेशन करते होंगे और ठीक है हम 2-4 टेक कंपनीज को भी बुला लेते हैं. लेट अस हैव दिस unofficial think tank or where you have your industry and your stakeholders and maybe academia and everyone, and then ठीक है हम तो टेक वाले हैं ही तो हम हर चीज़ में टेक का तड़का लगा देंगे, बट देन आप सारे आए हेल्थ वाले आए और एक ट्रेडिशनल डॉक्टर को किसी गांव से लाएं और उसको एक राउंड टेबल पे बैठाएं. सो हमारा बड़ा फोकस है कि वी क्रिएट दीज राउंड टेबल्स एंड दीज स्मॉलर कम्युनिटीज where you have cross pollination of knowledge to start with, and then once they are because we come from a community building background, I think once they are together they'll start connecting dots कि यार आप उसको जानते हैं वो ऐसा कर देगा. तो सिर्फ ये कि लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है. एंड उसमें से अपॉर्चुनिटीज बहुत निकलती हैं. सो वी आई कांट डिस्क्लोज द नेम्स बट वी वर्कड विद अ वेरी लार्ज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड इन द US. एंड हम जब उनके साथ बैठे थे तो यही बात हो रही थी कि व्हाट कैन टेक ब्रिंग टू द फ्यूचर ऑफ नो ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ कार्स. आई मीन अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो आपकी आ ही रही हैं, but what else can be put through AI and machine learning? Some very good use cases came out of that, but one was where you had advertising and the automotive industry, the advertising agencies, and then the tech people, and we had come up together with a solution that would make money. So एक वो प्रोडक्ट डिवाइस किया था, बट अगेन आई मीन आई कांट गिव टू मेनी डिटेल्स. No, but we'd love to have you on बड़े the... मजे की बात होती है कि व्हेन यू ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, दैट इज सो मच फन बिकॉज एक डिफरेंट आपको नज़रिया मिलता है, एक डिफरेंट सोचने का तरीका मिलता है.
मतलब एक आर्टिस्ट जिस तरह सोचता है उस तरह एक मैथमेटिशियन नहीं सोचता, और जिस तरह एक केमिकल इंजीनियर सोचेगा उस तरह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं सोचेगा. So I think there's a lot of problem solving that we can do internally, just by sitting down together. Yeah, just by sitting together. Absolutely. मैं सिर्फ जो आपका एक एग्जिस्टिंग पॉइंट था टैलेंट पे एंड जो हमारे ऑब्वियस इश्यूज हैं, ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया में जाएं तो हमारे एथिक्स का एक मसला है. पर्सनली आई वाज वेरी कंसर्न विद दिस, क्या इशू है क्या, कि मतलब क्यों हम ऐसे हैं. एंड आई फील कि अवाम की गलती नहीं है, इट इज़ द सिस्टम that has created and encouraged the behavior. And because this is a closed economy, because 99 point something% of people have never traveled outside, right? We are border locked. ना हम अपने किसी नेबर के पास गए, ना कहीं और. So ये जनरेशन है जिसने शायद ऑनलाइन चीज़ें सीखी हैं, बट देन जो भी हम ऑनलाइन सीखते हैं और जो प्रैक्टिकली सोसाइटी में चलता है वो बड़ा डिफरेंट है. सो प्रैक्टिकली सोसाइटी में शॉर्टकट्स ही चलते हैं. वो जो लाइसेंस बनवाने जाता है वो उसमें से जो ज़रा शॉर्टकट लगा के जल्दी बनवा लेता है, वो उस मौके पर ज़्यादा सक्सेसफुल है. जो लाइन में खड़ा है क्योंकि आगे से लाइन टूटी है. तो पता ही लगा कि हमारा टैलेंट जब बेहतर इकोसिस्टम्स में जाता है, दुबई में, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर सिस्टम है, तो सिस्टम में वो आउट परफॉर्म कर लेते हैं. लेकिन जब वो इस सिस्टम में, जो कि सिस्टम ख़राब है, तो उन्हें शॉर्टकट्स की आदत पड़ जाती है. एथिक्स सिखाने वाला कोई नहीं है. लेकिन अगर हम एक दफ़ा सिखा दें और इससे हम वो ट्रेनिंग वाले पॉइंट पे आते हैं, तो फिर हमें नज़र आता है कि द टाइम इन अगेन दिस टैलेंट परफॉर्म्स वेल, राइट. क्या पता किसी को, बेचारे को किसी ने बताया ही ना हो कि यार मीटिंग स्केड्यूल करके अगर आपने कैंसिल करना, इट्स कंसिडर्ड बैड, राइट. और यू शुड बी सॉरी, और यू शुड हैव अ लेजिटिमेट रीजन, और लाइक हाउ थिंग्स आर डन, बिकॉज नो वन रियली टीचेस दिस स्टफ in this country. Or maybe I don't know what universities teach because I've never been to university, but I think the technology ecosystem, because of being global in nature, they have a better work ethic, they have a better learning, they have a more broader knowledge base, and it should be them who should train the future generation of Pakistan. For example, the I don't know, whoever is the traditional industry, उनका वो एक्सपोजर है ही नहीं दुनिया के साथ. आप तो डे इन डे आउट काम कर रहे हैं. अभी मैं कोट मोमिन में था जहाँ से मैं यहाँ आया हूँ, तो वहाँ पता लगा कि एक लड़का है जिसने फाइवर पे कोई अकाउंट बनाया, उसने 5 लड़कों को ऐड कर दिया वहाँ पर ही, उन्हें ऐसी और सिखाई. अब वो 35 लोग हो गए हैं. पिछले 2 साल में उन्होंने $1 मिलियन रेवेन्यू कमा लिया. अब वो 35 माशाल्लाह, और अब वो 35 लोग कह रहे हैं कि वी विल ट्रेन मोर पीपल, राइट, बिकॉज दे केयर अबाउट देयर रीजन एंड दे लाइक के कोट मोमिन में हम 1000 लोगों को ट्रेन करेंगे. तो मैंने कहा आपके ख्वाब बहुत छोटे हैं, आप 10,000 लोगों को ट्रेन करें, आप मिलियन लोगों को ट्रेन करें. भाई आप 35 हैं तो आप 3500 क्यों नहीं है. 2 साल हो गए, मतलब 18,000 बच्चे डेली पैदा होते हैं, तो हम ट्रेन 1000 करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पर एक पोटेंशियल है कि वी कुड ट्रेन मिलियंस ऑफ पीपल, एंड इफ वी डू इट वेल, टेक ओवर द वर्ल्ड. I agree with you 100%. देयर इज अ टैलेंट, लाइक नॉर्वे सेइंग कि 40,000 लोगों का टैलेंट गैप है. 40,000 मजाक है, इधर इवेंट में लाख आ जाते हैं, मतलब 18,000 तो रोज़ पैदा हो रहे हैं. नॉर्वे का 40,000 तो आप कल प्लग इन कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर उस तरह उस टैलेंट को वो इन्वायरमेंट दें जो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज हमेशा से दे रही हैं, जो आपकी कंपनी में इन्वायरमेंट है, दैट इज़ नॉट अ पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, लाइक दैट इज़ एन आउट ऑफ पाकिस्तान एक्सपीरियंस. जो होंडा पाकिस्तान एक्सपीरियंस लेके आया था वो जापानीज़ वर्क कल्चर था. तो बेसिकली जो कल्चर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में है, अगर सिर्फ हम इस इंडस्ट्री को ग्रो करा दें तो हमारा मुल्क तरक्की कर लेगा. मतलब हम क्योंकि यही तो मुल्क है. और अब आजकल हमारा बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि लेट्स से व्हाटएवर इज़ द साइज ऑफ 5 रिवर्स, हाउ कैन इट बी लाइक, ये 10x कैसे हो सकता है, ये 100x कैसे हो सकता है, ये 1000x कैसे हो सकता है. क्योंकि आई थिंक वो पाकिस्तान में चैलेंज है. पाकिस्तान में चैलेंज है कि आप 10 लोगों से 100 पे कैसे जाते हैं, 100 से 1000 पे कैसे जाते हैं, 1000 से आप लाख पे कैसे जाते हैं. लाख पे तो कोई भी नहीं आज तक गया. आई थिंक 10,000 पे भी शायद एक आधी कंपनी कोई होगी. और मैं पर्सनली बड़ा फैसिनेटेड हूँ कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर टैलेंट की अबंडेंस है, वहाँ पर क्यों लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर कंपनीज या ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस आपको नज़र नहीं आ रही. नॉलेज इकॉनमी में, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में आपको नज़र आ रही है. ट्रेडिशनल में 50,000 लोग भी लोगों के पास हैं. और आई थिंक कि इफ़ वी क्रैक दैट कोड and we create a framework that people can replicate, then anyone can be like कि अच्छा यार हम सारे इकट्ठे ग्रो करेंगे. मतलब हम एक कंपनी नहीं बनाना चाहते 50,000 लोगों की, हम चाहते हैं सब कंपनीज जो 50,000 लोगों की. 50,000 ब्लॉकचेन डेवलपर होना चाहिए यहाँ पर, 50,000 गेम डिज़ाइनर्स होने चाहिए. उसमें जो एक बहुत बड़ा मसला है ना, वो ये है कि वी डोंट नो हाउ टू वर्क टुगेदर एज ग्रुप्स. हमें ना मास्टरमाइंड्स की आदत है,
कि हाउ डू बिजनेस पीपल सिट टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर ग्रो, वो हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरह का नहीं होता. कभी भी आप किसी से बात करेंगे किसी और टेक कंपनी से, तो कोई भी आपको नहीं बताएगा और प्रॉब्ली आप भी किसी को नहीं बताएंगे कि भाई मेरी बिजनेस डेवलपमेंट किस तरह हो रही है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो ये जो एक है ना द बिलीफ दैट द राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल बोट्स, ये मिसिंग है हमारे यहाँ. ये एक माइंडसेट जो है ना, इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक जो स्केलिंग में और मसला, एक तो आई फील लाइक नेक नियति से और खुले दिल से हम लोग साथ नहीं बैठते. दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है, जो मुझे पर्सनली भी फेस करनी पड़ी है, इसकी वो जो आपने और मैंने अभी कल्चर की बात की थी ना कि वी आर अ फैमिली, उसको जब आप स्केल करते हैं ना तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों को सिस्टमाइज़ करना पड़ता है. बिकॉज ऑब्वियसली जो आप 10 लोगों के लिए कर सकते हैं वो आप 1000 के लिए नहीं कर सकते. जो पॉलिसी आप 100 के लिए बना सकते हैं वो आप 1,00,000 के लिए नहीं बना सकते, राइट? तो एक वो थोड़ा सा चैलेंज है कि किस तरह, हाउ डू वी कीप दैट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड फैमिली बट एट स्केल. तो ये मुझे पर्सनली दो चीज़ें लगती हैं. No, that's a very good point. ये दो मुझे चीज़ें पर्सनली लगती हैं जो कि एक मसला है. दूसरी बात ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो काफ़ी पीछे है. अभी भी मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स में बहुत विल है चीज़ें बदलने की, नई चीज़ें करने की. वो समझते हैं कि देयर इज़ लाइक अ चेंज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, और मुझे लगता है कि दोज आई फील आर प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग, कि you create an enabling environment at a much more significant level than solving like all these smaller issues. क्योंकि smaller issues बहुत ज़्यादा हैं और वो हमारी ज़िंदगियाँ कंज्यूम हो जाएंगी. हम कहेंगे यार वो DHA का पता नहीं अभी कितने साल बाद जाके तो ये वो पुल बना है, राइट? सो वो नहीं डेफिनेटली, बट आई डू थिंक कि आपको एजुकेशन से शुरू करना है. बिकॉज अब बच्चों की ग्रूमिंग वहाँ से काफ़ी हो सकती है. आप घर तो नहीं कंट्रोल कर सकते, आप स्कूल्स कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जो हमारी बात अभी एथिक्स की हुई है एंड यू नो टीचिंग चिल्ड्रन टू प्रॉब्लम सॉल्व, टू हैव ओपन माइंड्स, आइडियाज़ इसी तरह जनरेट होते हैं. Absolutely. जब आपका दिमाग खुला होता है तो आपको आइडियाज़ आते हैं. एक वो, और एक दूसरी जो आप कह रहे हैं कि विल है, हमारी तरफ से भी विल है, आप कह रहे हैं पॉलिसी मेकर्स की तरफ से भी विल है. मेरा ख्याल है वो मसला अगेन वही आ रहा है कि द राइट पीपल आर नॉट सिटिंग एट द टेबल टुगेदर. ये एक बहुत बहुत बेसिक मसला है. ये तो IT में मैं कहूँगा कि 200%, केवल 200%. और हम वो लम्स वाली बात पे भी आते हैं, बट रिसेंटली कुछ मसले मसाइल हमें भी आए और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि जो हमारे क्लोज्ड इकोनॉमी वाले कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या है कि जो द रियल IT इंडस्ट्री जिसे मैं कहूँगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी सर्कल्स में नहीं है. मैं एक जगह बैठा था, किसी ने मुझे कहा, और ये बड़े सीनियर अफसर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दोस्त भी अगर वो देख लें तो माइंड ना करें, कि उन्होंने कहा कि IT वाले मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं. तो मैंने कहा सर ये बात आप कैसे कर सकते हैं, आप बाय डेफिनेशन ही गलत बात करें. तो उन्होंने कहा नहीं वो अपना पैसा बाहर रखते हैं. भैया क्या है हमारा? तो मैंने कहा कानून इजाजत देता है और हम ला के करें क्या? नहीं एक सेकंड, अब वो पैसा बाहर नहीं रखते. वो बेचारे जब पैसा अपना इधर ले आते हैं तो जो उन्होंने बाहर की सर्विसेज ली होती हैं वो क्रेडिट कार्ड पे भी नहीं हो सकती. मतलब वी आर द वन इंडस्ट्री जिसकी कोई इम्पोर्ट नहीं होती, लेकिन हम लोगों को कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स वगैरह चाहिए होती हैं बाहर. हम वो पेमेंट्स नहीं कर सकते. हम एक मार्केटिंग रेप US में हायर नहीं कर सकते बिजनेस ग्रो करने के लिए. हम पैसा कैसे बाहर भेजेंगे? अब वो कहते हैं ना कि जब वो हमने 50% कर दिया स्टेट बैंक की तरफ से, यू कैन कीप इन डॉलर्स एंड सेंड अब्रॉड. जब एक्चुअली भेजने की बात आती है तो बैंक कहता है आप कर ही नहीं सकते. अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक करनी थी पेमेंट, 30% टैक्स दें, उसके ऊपर फिर जाएगी पेमेंट बाहर. इतने जलील हुए हैं हम कि कोई हद नहीं. मतलब यू नो हमारा पैसा है, हमने हक हलाल से कमाया है, उसको हम मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें किसी को बाहर पेमेंट करनी है, नहीं कर सकते. और ये देखें ना, अब ये जो मसले हैं, ये जब रिपैट्रिएशन वाला इन्होंने किया ना 50%, तो मैं कहीं इस्लामाबाद में बैठा था तो मैंने कहा दिस इज़ नॉट नीडेड. तो मैंने कहा आपको किसने मशवरा दिया? चाहिए नहीं. अमेरिका में LLC ओपन होती है तो कंपनियां तो अपने फंड बाय रखेंगी, आप वो आसान करें. आप आसान करें दुबई जाना, अमेरिका ट्रैवल करना, यूरोप जाना. आप एक्सेप्ट करें कि जितने लोग हमारे बाहर जाते हैं इस मुल्क की ग्रोथ ज़्यादा होती है और इस इंडस्ट्री का फेवर है पाकिस्तान पे, कि इतने मसलों के बावजूद भी वो पाकिस्तान बैठे हैं. आधे लोग मोहब्बत में, आधे लोग शायद फैमिली के लिए. और ठीक है सारे लोगों को मुल्क से जो है ना एक हमें है कि यार हमारा मुल्क है, जो कि पता नहीं रियलिटी में हमारा है किसका है. लेकिन ये कि एटलीस्ट जो कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का एग्जिस्टिंग
विदाउट एनी सपोर्ट इस मुल्क में है. Pakistan like this industry, Pakistan they owe a favor, right? And our country should recognize and support. And I agree that it's about bringing those right people together, whether they are in traditional industries, in thought leadership groups, in people who make decisions, no matter how they make it, but at least they have power. So to help them understand that all our common goal is economic progress, right? उस पे हम सब एग्री करते हैं कि मुल्क तरक्की करनी चाहिए, उसी पे सारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं. तो हमसे ज़्यादा कौन बता सकता है, मतलब आपसे ज़्यादा कौन बता सकता है, इतने डॉलर आप लोग लाएं. और अब हमारी थोड़ा सा हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जब हमने ये बनाया थोड़ा बहुत आगे पीछे एक्सपोजर मिला, तो हमने यही किया, हम सारों को बुला लेते हैं. हम कहते हैं बस आप आ जाएं, और आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप कोई और हैं, तो प्लीज़ आएँ और हमारी कम्युनिटी से मिल लें. लाइक हमारी सिर्फ आस्क ये है कि आप एक्सपोजर तो लें कि एक नई दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है, जिसका आपको नहीं पता, जिसका क्वाइट ऑनेस्टली एजुकेशन में इतना कुछ है जो टेक कर सकती है. या एडटेक में, और कितने बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जो शायद एक बटन दबाएं और पूरे मुल्क का फ्यूचर बदल जाए. लेकिन ये कि, और शायद वो करना भी चाहते हैं, शायद ये कि कोई फोरम नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई विल नहीं है. फिर एट द एंड ऑफ द डे एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ठीक है हम टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, डॉलर कमाते हैं, बाहर क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पर काम करना जितना मुश्किल है ना, हमने कोशिश भी की, हम नहीं करना चाहते, तो हम काम करना भी आसान बनाए. लोकल इंडस्ट्री भी सीखे कि नहीं यार, अगर उन्होंने ग्रो करना है, दे नीड टू ओपन अप, दे नीड टू सपोर्ट, दे नीड टू बी मोर कोलैबोरेटिव. और हमारी लम्स वाली आप बात कर रहे थे कि लम्स और पंजाब यूनिवर्सिटी का डिफरेंस, आई थिंक ये वाला वायरल जाएगा. हाँ, लेकिन बिफोर एडिंग टू दैट, ये मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी ना, तो फिर चीज़ें सही होंगी. मतलब कि इफ यू लुक एट फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, IT कंपनीज को क्या चाहिए? आई थिंक ऑल सारी कंपनीज को, यू नीड एक्सेस टू मार्केट, different markets, and you need to be able to go there easily and meet with other companies. Embassies करें facilitate, दुनिया भर में हमारे जो जाते हैं इतने सारे, वो करें facilitate. वो हमारे पास बहुत स्टोरीज है, वो शुरू नहीं, वो हमारे पास भी है. हाँ, वो शुरू करते हैं, कुछ होने लगता है, एम्बेसडर चेंज हो जाता है, फिर सारी चीज़ जीरो से शुरू होती है. आई थिंक बस बिजनेस कंटिन्यूटी हमें चाहिए. You need a lot of stability on the government side, but inshallah, hopefully that will happen someday. I think वो पंजाब और पंजाब यूनिवर्सिटी और लम्स वाली जो बात है, that's a perfect example. Because दोनों पाकिस्तान में ही हैं. Yeah. Right? दोनों पाकिस्तान में हैं, दोनों के पाकिस्तानी प्रोफेसर्स हैं, मोस्टली पाकिस्तानी बच्चे पढ़ने जाते हैं. मतलब इन्वायरमेंट सिर्फ थोड़ी सी चेंज की है ना आपने, क्वालिटी आपने थोड़ी चेंज की है. वो अब इसी तरह अगर in private companies बैठेंगी and they have like-minded individuals who want to help each other out. I mean, the pie is so big that if somebody has access to a large piece and they can't eat all of it, then distribute it amongst others. That's the, I think, sort of thinking that needs to come in the IT industry. हमारा वो एक लिमिटेड माइंडसेट है कि भाई ये मेरा छोटा सा पाए है, तो ये बस मेरा ही हो सकता है कि आप और मैं अगर मिल के पाए बनाए तो वो 4 गुना हो, राइट? और अगर हमें आधा आधा भी मिले तो हमारा डबल हो जाए शेयर. बट ये थिंकिंग आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ती है. आई थिंक that's the biggest thing. And now coming back to the LUMS thing, I mean, मुझे तो पढ़ना I think LUMS ने सिखाया. I wasn't like completely blew off my A levels, and then I was pre-med, decided not to do it because बड़ी मेहनत लगनी है. I backed off. I wasn't passionate about it. And then LUMS की, I think from my second year onwards, that's when वो कहते हैं ना कि आप दिमाग में explosion होती है, and then you understand what you're doing. That's I mean, I attribute it all to LUMS, with different courses, having read multiple books, हर किसी का different perspective. हर मतलब कि खाली ये नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपने खाली मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, कंप्यूटर साइंस करनी है, दैट्स इट. सोशल साइंसेस कितने कोर्सेज, इकोनॉमिक्स कितने कोर्सेज, यू जस्ट वेल राउंडेड एजुकेशन, एंड देन रीडिंग about different religions and modernization in Islam. It just molded my brain differently, and I think that's an opportunity जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, they should look at it और उसको प्रमोट करना चाहिए. बिल्कुल 100%. इसीलिए हम लम्स के सामने बैठे हैं. हमने कहा ये
जो है ना इनोवेशन ओवरफ्लो करेगी। थोड़ा सा थ्रू ऑस्मोसिस आप वो कर हम लें। जाते भी रहते हैं, कुछ कुछ सेशन करते रहते हैं हमने, बट आई थिंक यू नो वीव हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आई विल जस्ट लाइक कुछ चीज़ें मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी शेयर कर दूंगा, बट जस्ट ऑन द रिकॉर्ड आई फील के because there is such a massive disconnect in the innovation economy. For example, everyone knows who all the auto manufacturers in this country are, right? It's a regulated industry. Innovation by definition cannot be regulated. कोई बंदा बैठा है किसी गांव में, कुछ सोच लेगा, वो दुनिया बदल देगा, तो वो ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली इकट्ठे हो सकते हैं, यहाँ को मौके क्रिएट करें। हमें इवेंट्स अच्छे लगते थे, हम जाते थे बाहर, हमें लगा कि यार यहाँ भी होने चाहिए, यू नो, हमें पता है कि हमारा एसेंस जो है, हमारा कोर ये है कि वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। हमें बड़ा क्लियर है कि जब तक वो होता रहेगा कोई ना कोई लोगों का फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि जो सारी हमने प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स बताई कि यू नो वी नीड अ ग्रोथ माइंडसेट, वी नीड पीपल हु अंडरस्टैंड के यू नो दे नीड टू इन्वेस्ट ऑन देयर पीपल. I feel that there are already a lot of people who share all these values. They just do not know each other. I agree with you. There is a guy in Bahawalpur, right, who runs a 700 people software company, तौकीर अहमद, एनिग्मेटिक्स के नाम से, और उसने वो खुद बनाई अपने हाथों से। उसने 700 लोग खुद ट्रेन किए हैं। एक तो ये कि अपने इलाके की मदद करने के लिए, और लाहौर में भी बहुत टैलेंट है जो उसने ओवर द ईयर्स ट्रेन किया है, और वो लाहौर की कंपनीज में बैठा है। अभी जो कोट मोमिन की स्टोरी है, मतलब मैं मुल्तान में स्टोरियाँ सुना सकता हूँ, लाहौर के अंदर भी कंपनीज हैं। सो आई थिंक कि जो आईटी इकोसिस्टम भी है, उसमें भी टू नंबर वन आइडेंटिफाई कि हु आर द पीपल हु शेयर द सेम विजन एंड द वैल्यूज, राइट, एंड देन दे कम टुगेदर, एंड द डे दे कम टुगेदर आई थिंक विल सी अ मैसिव चेंज. वी कंसिडर्स आवरसेल्व्स एज अ कैटलिस्ट इन अ वे कि हम तो सारों से मिले, हमने सारों से इंटरेक्ट किया भाई, हम तो कुछ करते हैं, हम जाते हैं एक एक से मिलते हैं। वो जो पाकिस्तान में एक ट्रेडिशनल तरीका है कि आओ मिलो, तो हम 6 दफ़ा भी लोगों से जाके मिले। और जो नहीं सपोर्ट करते वो किसी की सपोर्ट नहीं करना चाहते, और जो करना चाहते हैं सपोर्ट, उन्हें मिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मैं आई नो समवन हु हैज़ बीन अ मैसिव सपोर्ट टू नॉट जस्ट आवर वर्क बट दिस होल इंडस्ट्री. आई हैव नेवर मेट दैट पर्सन इन 4 years. लाइक ही लिव्स इन कराची, और बस कोइंसिडेंस होता है कि नहीं मुलाकात होती, लेकिन मैं कहता हूँ जी कि ये इस तरह हो जाए, वो कहते हैं डन है। तो आई थिंक हमें जो लोग काम करने वाले हैं उनको इकट्ठा करना, उनको इकट्ठा करना है, और उनको बस इकट्ठा कर दें, जो हम इस दफ़ा दोबारा एक काविश करेंगे. एंड देन ओवर द years we ended up building a global community, and I'll refer back to one of the things you said earlier. I think you said earlier कि when you work in team augmentation and you have like your name and your pace and your personality, then you figure out क्या अच्छा कौन से लोग हैं जो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके कल्चर को समझते हैं. तो मैंने ट्रैवल बहुत किया, और मैंने देखा कि हम बाहर जाते हैं, हमारे कुछ लोग, और उस सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, सही है, लोग नाम बदल लेते हैं, लोग अमेरिकनाइज हो जाते हैं, एक्सेंट आ जाते हैं, सब सही है, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, और शायद किसी ने बताया नहीं था उन्हें. एंड ऑल्सो बाय द वे आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है जब आप अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के रखती हैं ना, तो दूसरे की भी आँख में आपके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, कम नहीं होती. बिल्कुल. और वो तो चले, उसके पीछे रीज़न है कि पहले हमारी अपनी रिस्पेक्ट हमारी आँख में है, हमारे यहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत बड़ा है. लेकिन सो ओवर द ईयर्स क्या हुआ कि बहुत से इंटरनेशनल दोस्त बन गए, जिन्हें मैं दोस्त कहूँगा वेरी क्लियरली, जो एक कम्युनिटी है जो ना सिर्फ हमें सपोर्ट करती है, बल्कि इस मुल्क में बड़ा उनका रोल है. हमारी जो दोस्त हैं क्रिस्टन एंडरसन, जो नॉर्वे में होती हैं, सिर्फ क्योंकि एक हमारा उनसे एक कनेक्शन है, एक ताल्लुक़ है, उन्हें ये मुल्क अच्छा लगता है, हमारा कल्चर थोड़ा समझ आया, तो पिछले 3 डेलीगेशन उनकी मदद से पॉसिबल हुए. वो ना होते अगर वो ना करते. अगर स्टार्टअप ग्राइंड हमें अमेरिका में ना बुलाता, तो आज तक हमको 4 डेलीगेशन लेके गए हैं यूएस. मतलब जितने हमने इंटरनेशनल काम किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि किसी और कल्चर से किसी इंसान को हम समझ आए, हमें वो समझ आया, और पता लगा कि इंसान तो सेम ही होते हैं, मसले मसाइल सेम है, मोटिवेशन सेम है. और आई थिंक वो प्रमोट करना जो एक फेस है एक्चुअल पाकिस्तान का, एक तो ये कि उस पर प्राउड होना कि यार मतलब हम लाइक वी हैव समथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड, एंड नंबर 2 देन ब्रिंगिंग दैट to the world will actually open up Pakistan, will open doors for our population, will bring the much needed respect that our country and our people deserve, right? We need a little bit of brand building. Yeah, brand building.
और उस पे जो आपका विजन है हम यही चाहेंगे कि जहाँ हम सपोर्ट कर सकते हैं हम हाजिर हैं, एंड देन we'll try to connect you with other cool people that we found who understand things and who want to help That and would who be are also wonderful. going through the same struggle. So I think वो हमारी shared struggle है जो हमें शायद इकट्ठा कर रही है कि हम सारे जो है ना वो अब हम थक गए हैं कि यार बस अब क्या करें, तो अब कुछ ना कुछ आपस में शायद बैठ के कुछ करेंगे और कुछ आपस ना में कुछ बैठ के जरूर निकलेगा। इंशाल्लाह इसी के साथ आई वुड से कि आप दोनों का शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस and looking forward to hosting you and having you on our stage at the upcoming Future Fest. Inshallah. And figuring out how we can all work together to take Pakistan to the next level and Inshallah. unlock the potential of Pakistani talent. Thank you so much. Thank you very much.